प्यार करती हो मुझसे? भरोसा है मुझ पे? नो। तो बस डोली उठने की देर है। जब बात आती है रोमांटिक फिल्मों की, प्रेम कहानियों की जिन्होंने बॉलीवुड में इतिहास बनाया, तो राज और सिमरन का नाम सबसे आगे आता है। Love Guru. I'm romancing Love Guru. The iconic couple from the legendary film Dilwale Dulhaniya Le Jayenge have filled our hearts with love for 25 years now. और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए लंदन में शाहरुख और काजोल का एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनवील किया जाएगा। बड़े बड़े देशों में ऐसी स्पेशल बातें होती रहती है। If you are someone who was born in the 80s or even the 90s, chances are कि DDLJ आपकी जिंदगी की पहली या शायद सबसे रोमांटिक फिल्म है। The movie was one of the first to talk about second generation Indians living in the West. The clash of values, pyar, parivar, fatkar, it had all the ingredients of being an entertaining film. But what really made it memorable was the fabulous chemistry between Shah Rukh Khan and Kajol, which sealed their position as the most romantic pair in Bollywood. The two had worked in movies like Bazigar before, lekin DDLJ ke baad, the two were cast together in multiple movies to create memorable stories that have stayed with us for years after. Check it out. Shah Rukh and Kajol are not just great friends off screen, they have worked together in multiple films over the years. Both of us, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन yes, having said that, I think the level of comfort and दोस्ती और आराम से जो हम काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते, एक्चुअली शायद इसलिए ही अच्छा लगता है। Even the fact that Shah Rukh was already married to Gauri and Kajol eventually married Ajay Devgan didn't alter the effect watching the two on screen has had on their fans. ये अच्छी स्पीच थी, इस पे तालियां होनी चाहिए। Maybe it's their combined energy, spontaneity and effortless on-screen chemistry that has made sure कि जब भी दोनों एक फिल्म में काम करते हैं तो लोग दिल थामे रह जाते हैं। The two were first seen together in Bazigar, लेकिन वहाँ Shahrukh was playing a character with grey shades who actually kills Kajol's sister played by Shilpa Shetty. But DDLJ was the first time Shah Rukh and Kajol came together in a full-fledged romance, complete with Milna, Bichhadna and Mummy Papa Ko Manana. DDLJ, which was shot in London, Europe and India, completes 25 years this week, and to commemorate the special occasion, Heart of London Business Alliance ने announce किया है that राज और सिमरन का एक स्टैच्यू लंदन के लेस्टर स्क्वायर में इंस्टॉल किया जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टैच्यू एक ऐसी सीन को डिपिक्ट करेगी जो लंदन में फिल्म किया गया था एंड विल बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी ट्रेल कॉल्ड सीन्स इन द स्क्वायर, जहां हैरी पॉटर, लॉरेल एंड हार्डी और वंडर वुमन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के स्टैच्यूज भी इंस्टॉल्ड हैं। The statue, which will be built in bronze, is sure to attract thousands of visitors each year and NRIs in London who are huge Shah Rukh Khan fans. But Shah Rukh and Kajol are not just famous for their pairing in DDLJ. The two went on to create an iconic pair of Rahul and Anjali in the film Kuch Kuch Hota Hai, which recently celebrated 22 years. First of all, because this evening is important for all the reasons that we've heard and all the reasons, inshallah, we'll keep hearing for the next 100 years with respect to Dharma and Kuch Kuch Hota Hai and inshallah, Karan Johar. आज भी राहुल और अंजलि से जुड़े डायलॉग्स, गाने और उनका वो फ्रेंडशिप नोज टिकलिंग हाई फाइव लोगों को याद है। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। Shahrukh and Kajol have starred together in My Name is Khan, Kabhi Khushi Kabhi Gum, Dilwale and Karan Arjun, with Kajol making special appearances in films like Kabhi Alvida Na Kehna, Zero and Kal Ho Na Ho as a lucky charm. The two haven't really worked together in the recent past, but we know that जब भी ये दोनों actors एक साथ on screen आएंगे तो दिलवाले audiences का प्यार ले जाएंगे। Happy 25th DDLJ.